बेसिक्स ऑफ योर फिजिक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. ओके, तो अब देखो यहां पर so displacement distance, you just see here, for example, this is your house. Okay, so this is your college. You just see here, see from house to college you are going along this path. Okay, so and this is said to be distance. Kitna hai malum? Distance 10 kilometers. Okay, from house to the college the distance is going to be 10 kilometers. Okay, but you requested your father, डेली आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हर दिन मुझे ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा, मैं कॉलेज को जाना मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा, बोल के आप क्या करें, यू डिमांड योर फादर टू बाई वन स्मॉल चॉपर, हेलीकॉप्टर. ओके, ओके, दिस अपीयर्स टू बी अ जोक, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग हियर. ओके, तो योर फादर टोल्ड, आपके बाप क्या बोले, आपके फादर क्या बोले, अरे मैं भी यही सोच रही थी आपके लिए कुछ हेलीकॉप्टर ले लूं, बच्ची बहुत रोज देर पहुंच रही स्कूल को, सो आई परचेज अ हेलीकॉप्टर, व्हिच कलर यू वांट, जस्ट लेट अस गो टू द शोरूम टुडे एंड बाय वन हेलीकॉप्टर. It's a matter of 2 crores, that's it. A basic model we'll consider. तो बोल के आप हेलीकॉप्टर खरीदे, अभी हाउस के ऊपर हेलीपैड बने, कॉलेज में भी हेलीपैड बने, and you are just traveling from house to college along this path. Okay, said to be straight line. Okay, you're going in a straight line, and this is taken as displacement. इसको क्या बोलते हैं? You call it as a displacement. Okay, अगर displacement measure करें, it was only 7 kilometers. Okay, 3 kilometers extra you have traveled because the road was in a curved manner. रोड जो है ना सीधा नहीं है, you have to take many curves and reach your college. अभी हेलीकॉप्टर को it did not follow any road, just क्या है, हेलीपैड के ऊपर चढ़ जाना है और हेलीकॉप्टर जो है थोड़ा रेस होगी, डायरेक्टली इट विल रीच योर टारगेट. अगर टारगेट जो है ना रीच है तो डायरेक्टली जो है कॉलेज को चले जाएंगे, कुछ भी मुड़ेंगे नहीं, इधर उधर मुड़ेंगे नहीं, डायरेक्टली और रीच योर टारगेट. ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर. ओके, इस तरह के हम मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे अभी. फॉर एग्जांपल, यू आर टेकिंग अ कंप्लीट सर्कल. ओके, ये सर्किल का रेडियस कितना था? 7 किलोमीटर. ओके, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस कितना है? 7 किलोमीटर. ओके, एंड दिस इज अ रोड अलोंग विथ a vehicle is moving in a curved path. What is the distance and displacement? Okay, a vehicle is moving in a curved road having a radius 7 kilometers. इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बोल के पूछना. हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन. अभी देखो, डिस्टेंस का मतलब 2 pi into capital, 2 pi into capital. Okay, and the displacement is going to be 0. Displacement 0 है. Okay, for taking one complete circle, क्या है ये? कंप्लीट सर्किल. कोई भी बॉडी अगर कंप्लीट सर्किल, दिस इज ये पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज ये, एंडिंग पॉइंट इज आल्सो हियर ओनली. ओके, यहां से स्टार्ट होगी कंप्लीट सर्किल, यहां पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो व्हाट इज द ब्लाइंडली द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पॉइंट, ending point and a straight line between them is said to be displacement. Okay, displacement is a straight line distance we call. Okay, so displacement is 0 whereas distance is 2 pi r. How much is distance? 2 into 22 by 7 into r, which is nothing but 7 kilometers. So how much it is? It is going to be 44 kilometers we found. Okay, a vehicle is traveling 44 kilometers of distance whose radius of the circle is taken as 7 kilometers. ठीक है, समझ में आ रही बात? Okay, अभी देखो नेक्स्ट. ये तो कंप्लीट सर्किल हो गया. So we shall discuss for half circle. We shall discuss for half circle. Okay, any body is traveling from here to here. Okay, point A and this is going to be point B. अगर half circle travel कर रहा, then what is the distance? तो ये हो गया distance. Okay, and what is the displacement? Displacement is nothing but a straight line. यहां से यहां पर जाएंगे आप लोग. This is called as displacement. Okay, so displacement क्या है, distance क्या है, अभी समझेंगे. अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? हाफ ऑफ द सर्कल है. इट इज नथिंग बट 2 pi कैपिटल इज द टोटल सर्कमफरेंस, उसका आधा. ओके, सो 2 गेट्स कैंसल, योर आंसर इज pi r, व्हिच इज नथिंग बट pi is 22 by 7, r is going to be 7 because radius is 7 kilometers. Let us take radius of a playground, this ground whose circumference is taken as 7 kilometers, radius is 7 kilometers. तो यहां पर चले गया, तो what is the distance? Distance is going to be how much? 22 kilometers.
देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक जाएंगे हम, ये 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डायमीटर है, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज डायमीटर व्हिच इज नथिंग बट 7 plus 7 which is going to be 14 kilometers, 7 plus 7 which is going to be 14 kilometers, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, 7 14 kilometers, just add करना, because diameter is nothing but double times of the radius which is 2 is nothing but 7 which is 7 which is 14 kilometers, okay। अगर डिस्टेंस 22 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जस्ट 14 किलोमीटर। नेक्स्ट 1/4 ऑफ ए सर्कल, ये होगा 1/4 ऑफ ए सर्कल। 1/4 ऑफ ए सर्कल का मतलब आप लोग जानते हैं, इट्स गोइंग टू बी दिस मच पार्ट ऐसे, या यू कैन ड्रॉ वन सर्कल, ओके, इन विच यू कैन टेक ओनली दिस मच पार्ट, okay। Radius is going to be 7 kilometers and this is also 7 kilometers, okay। So what is the distance and displacement, ये हो गया आपका distance, this one, and this is going to be your displacement, and you all know this is 90 degrees, ये हो गया आपका 90 degrees, तो ये हो गया आपका 90 degrees। 1/4 ऑफ ए सर्किल बोल रहे हैं ना, तो क्या होगा डिस्टेंस, व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस, what is going to be the distance, distance is nothing but 2 pi capital R by 4, क्योंकि 1/4 ऑफ ए सर्किल है तो टोटल पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो 2 1s 2 2s are 4, so this is pi by 2 into R, okay। pi by 2 into R क्या होगा यहाँ पर, it's nothing but you can just write 22 by 7, 22 divided by 7, और ये वाला 2, R क्या हो गया यहाँ पर 7, तो 7 7 gets cancel, your answer is 11 kilometers। तो डिस्टेंस क्या हो गया 11 किलोमीटर। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। 7 और 7 का मतलब ये हो गया 7 √2, ओके। 7 √2 पाइथागोरस से अप्लाई करो, 7 √2 R, सो योर आंसर इज 7 √2 R is from 7 into 1.414, if you want you can just calculate and keep the answer also, ठीक है। तो 1/4 ऑफ ए सर्किल भी खत्म हो गया, we have discussed about 1/4 of a circle, and the last one is 1/6 of a circle, 1/6 of a circle, तो 1/6 ऑफ ए सर्किल हो गया। So this is a 1/6 of a circle. So I have drawn a hexagon inside the circle to understand what I am going to do next. Next अभी देख लो यहाँ पर, let us take only this much part of a circle. Okay, so क्या है ये? This is called as distance. This is called as distance. And what is this? This is called as displacement. Distance you take it as d, and displacement you take it as s. Okay, so this is taken as displacement. Okay, now you all know, you should know one thing here. In a hexagon, this is 60 degrees, and this is 60 degrees, and this is 60 degrees. This is radius capital R, this is radius capital R, and this is radius capital R. Okay, okay. So 1/6 of the circle means what is going to be the distance and displacement. अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अ डिस्टेंस हियर। So distance का मतलब d, which is nothing but 2 pi into capital R by 6, which is nothing but pi R by 3. Pi is nothing but 22 by 7 into 3. R is nothing but how much? R is 7 kilometers. So 7 gets cancelled. 22 by 3 kilometers is going to be the distance. So distance क्या है? D. कितना है? Then what is the displacement here now? So if you want to discuss about the displacement, then what is going to be the displacement? You just see. Displacement is nothing but, if this is R and this is R and this is R, only radius is going to be the displacement, because when angles, अगर angles अगर same है तो ये sides भी same है,
बिकॉज इट इज एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल, तो रेडियस कितना लिए हम 7 किलोमीटर ले लिए. So our radius was 7 kilometers. That's why 7 kilometers is going to be your answer. Okay. 7 kilometers is going to be your answer. Okay. तो ये हो गया एग्जाम्पल. Now just see. Now this type of problems you can solve easily. This is an example problem. Okay. तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? A person moves in a semicircular radius. That is semicircle having a radius 20 meters. What was the radius here? Radius was 20 meters. Okay, as shown in the figure. If it starts at one end of the path and reaches the other end, find the distance covered and the displacement during the motion. Okay, so distance का मतलब let us take it as small d. Distance क्या है? It is just pi r. Why pi r? Because distance is nothing but 2 pi r divided by circumference पूरा ले लेना, उसमें से आधा डिवाइड कर दिया तो 2 चले गया. Your answer is just pi r. So pi कितना हो गया? 22 by 7. Yeah, you can write it as 3.14 into radius कितना हो गया? What is the radius he has given? It is 20 meters. So 20 meters. So you're getting the answer like this. And what is the distance? What is the displacement? Displacement is nothing but double times of the radius. So radius कितना दिया यहाँ पर? Radius दे दिया था 20. So 2 into 20, your answer is going to be 40 meters. Okay. ये हो गया आपका आंसर. No. Okay. So just see here. अब इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर हम इसको सॉल्व करके बताएंगे. थोड़ा शॉर्टकट मेथड्स यूज करेंगे हम. Let us use these shortcut methods to solve the problem. If a particle moves a distance of v1 and comes back to an initial position with a speed, okay, average speed. This is a concept of average speed. So how are you going to find out an average speed? How many types of average speeds are there? कितने तरह के average speeds होते हैं? We shall discuss here. So this is an average speed. Now just see. The first thing is एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब क्या है मैं बोलूंगा आप लोगों को, और कितने तरह के एवरेज स्पीड्स होते हैं वो भी बोलूंगा मैं. वन इज सेड टू बी डिस्टेंस एवरेज स्पीड. ओके, तो इसको शॉर्टकट में बोलूंगा डिस्टेंस एवरेज स्पीड, DAS. एंड दैट इज अनदर इज टाइम एवरेज स्पीड, ये हो गया TAS. बट हियर इन डिस्टेंस एवरेज स्पीड अगेन देयर आर टू सब केसेस. क्या है यहाँ पर? दो सब केसेस है. We shall discuss about both the sub cases. One is case 1, another is case 2. यहाँ पर two sub cases है. Average speed, there are two types: distance average speed, time average speed. Case 1 and case 2. There are no cases in time average speed, whereas the distance average speed is having two cases. Okay, so this यहाँ पर इसके अंदर तुमको दो केसेस आएंगे. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से. व्हाट इज एक्चुअली द डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड को मालूम करने से पहले व्हाट इज एक्चुअली स्पीड. स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम. मैं ज्यादा डिटेल से पढ़ा के बोरिंग नहीं कर दूंगा. टू द पॉइंट, a shortcut concept of this. So shortcut concept. Not only problems, we should explain the concept also in a shortcut so that it is not be boring here. अगर कोई इस चैप्टर को 10 घंटे में पढ़ाएगा तो मैं इस चैप्टर को 3 ही 4 घंटे में निपटा दूंगा पूरा चैप्टर. 3 hours, that is more than enough. मगर पूरे पॉइंट्स कवर करेंगे, पूरे मॉडल्स हम करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं. ओके, सो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम हियर. ओके, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड. Average speed is nothing but total distance by total time. What is the meaning of total distance by total time? अभी इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. यहाँ पर देखो कोई बॉडी यहां से यहां तक जा रहा है डिस्टेंस d1 इन टाइम t1 के अंदर, और बॉडी यहां से यहां जा रहा है डिस्टेंस d2 इन टाइम t2, और बॉडी यहां से यहां जा रहा डिस्टेंस d3 इन टाइम t3 एंड सो ऑन. If this is the situation, a body moves certain distance in certain time, certain distance in certain time, certain distance in certain time, then what is going to be an average speed here? So average speed, which is given as V average, क्या हुआ यहाँ पर? Total distance. तो total distance के प्लेस में क्या लिखेंगे? D1 plus D2 plus D3. अगर ये इसी तरह कंटिन्यू हो रहा तो we write like this. Dot 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 divided by time T1 plus T2 plus T3 plus and that dot dot. So
So this is actually the general formula for average speed. Average speed का मतलब क्या है? Total distance traveled by the total time taken. Okay, it's going to be the general formula. Okay, next I told you average speeds के अंदर formula discuss करें हम. Let us go ahead with the distance average speed. अभी distance average speed के बारे में बात करेंगे. So what is the meaning of distance average speed? Okay, in distance average speed I told you there are two types. Okay, कितने तरह के distance average speed है? Case 1 and the other is case. There are two cases in distance average speed. We shall discuss about each and every case. Okay. अभी देखो यहाँ पर I'm going to discuss about case 1. Case 1. यहाँ पर क्या है? You just see a body travels half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v. Okay. अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, समझो फर्स्ट 30 किलोमीटर अगर कोई बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा और नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितना स्पीड से जा रहा? 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा. ओके, तो आधा डिस्टेंस और नेक्स्ट आधा डिस्टेंस इफ इट इज गोइंग विद अ डिफरेंट स्पीड देन व्हाट इज गोइंग टू बी योर फार्मूला? इसका फार्मूला क्या है? इसका शॉर्टकट क्या है? वी विल डिस्कस. इसका डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट मेथड में डिस्कस. अभी हमको क्या करना है? जनरल फार्मूला लेना है. We need to consider the general formula. The general formula क्या है? अभी we have already discussed about the general formula. What was the general formula? V average is nothing but D1 plus D2 divided by T1 plus T2. Okay. So see the data. Okay. Data के अंदर something is missing. Find that missing thing here. Okay. What is missing here? Just see. क्या मिस हो रहा है यहाँ पर? What is missing? Time is missing. There is no discussion of time. Time क्या है यहाँ पर? No discussion of time. There is no discussion of time. So here time should not be there. You have to remove the time. क्या करना है इसको? You have to remove the time. So to remove the time, what will you do? क्या करना है? हमको remove करना है मतलब you all know V1 is equal to D1 by T1. This implies that T1 is equal to D1 by D1. V2 is equal to D2 by T2. This implies that T2 is equal to D2 by ओके. T1 is equal to D1 by V1, T2 is equal to D2 by V2. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला. अभी हमको करना क्या है? वी हैव टू रिप्लेस द थिंग्स. हमको रिप्लेस करना है, टाइम्स को रिप्लेस करना है. यहां पर अच्छी तरह से देख लो. VA is equal to D1 plus D2 वैसे लिखेंगे हम लोग. T1 के प्लस में क्या लिखेंगे? D1 by V1 plus D2 by V2. ये हम लिखने वाले. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आई टोल्ड यू ऑलरेडी. आधा डिस्टेंस ना, D by 2 and D by 2. It is half of the distance. यहां पर लिख दो d by 2 plus d by 2 divided by d by 2 divided by v1 plus d by 2 divided by v2. ये सबसे आसान तरीका है मैं जो समझा रहा हूं. I'm going to discuss the simplest method in the world. इससे सिंपल मेथड कहीं नहीं है. So VA is equal to d by 2 if you common out क्या होने वाला है? 1 plus 1 divided by d by 2 अगर कॉमन करें तो 1 by v1 plus 1 by v2. So d by 2 gets cancelled. What is left now? 2 is left in the numerator. V1, V2 is the LCM, or if you take the LCM, V2 plus V1. Okay, V1, V2 बच गया, तो you are getting this one. So V average का फॉर्मूला क्या हो गया? 2V1, V2 by V1 plus V2. This is going to be a shortcut formula. अभी shortcut formula तैयार हो गया. Okay, so this is going to be our formula. किसका फॉर्मूला है ये? Case 1. Distance average speed. Because in all the cases of distance average speed, we are talking about only distance. There is no discussion of time. Time average speed मतलब we will discuss about time only, no distance. When distance is present, time is absent. When time is present, distance is going to be absent here. That's why we call it as DAS and TAS. Distance average speed, time average speed. Okay. तो ये हो गया फॉर्मूला तैयार. We shall go for the next formula. इसके अंदर और एक क्या है? Case 2. Okay. I just told you that there are two cases, case 1 and case 2. Okay, we shall discuss. So distance average speed के अंदर I told you there are two cases, case 1 and the other case is case 2. So case 1 I have completed here. What is the case 2 I am completing now? Case 2 क्या है? If a body travels, this is A and this is B. This is point A and this is point B. Let us see what is going to happen. If a body travels A to B, a distance D1 which is B with a speed V1, and again what is going to happen? Again this is A and this is B. Okay. Again it is returning back like this.
it is returning back distance d2, that is d with speed v2. ठीक है, so it is traveling from a to b and b to a. Distance d, velocity v1, velocity v2, like this. Okay, so what is going to happen? देखो यहाँ पर केस टू क्या है, a body travels from a to b and b to a, that's it. Now what are you going to get? See क्या होता है यहाँ पर देख, तो यहाँ पर हम लेंगे v average, जनरल फॉर्मूला d1 plus d2 by t1 plus t2. अब what you should see here, no discussion of time. यहाँ पर कहीं भी टाइम के बारे में नहीं है, टाइम टी के बारे में कहीं भी डिस्कशन है, प्रॉब्लम में नहीं है, डायग्राम में नहीं है, इवन स्टेटमेंट के अंदर भी नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल ये बॉय गोज फ्रॉम हाउस टू स्कूल ऑन ए बाइसाइकिल विद a speed of 6 kilometers per hour and from school to house कितना, with a speed v1 6 kilometers per hour and returns back from house, this is a college. A boy goes from house to college with a speed of 6 kilometers per hour and returns from college to house with a speed of 4 kilometers. सुबह जल्दी जल्दी रहते हैं, आपको प्रेयर में अटेंड करना है, लेट हो गया तो बाहर ठहरना पड़ेगा, पनिशमेंट देंगे. तो यहां से आप जाएंगे 6 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न होंगे 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. दैट इज सेड टू बी गोइंग एंड कमिंग बैक. देन what is the formula we are going to apply here? No discussion of time, so replace time as it is as in the previous case. पहले हम जो कर रहे थे वही करना है यहाँ पर. Distance d is going to be same because time is not there. We write this as d1 by v1. इसको लिखेंगे d2 by v2. And you all know that d1 is equal to d2 is equal to d according to the statement, according to the situation यहाँ पर. क्योंकि यहाँ स्कूल से जितनी दूर, स्कूल घर से जितनी दूर है, घर भी स्कूल से उतनी दूर रहेंगे ना. Let us take distance is going to be how much? Distance let us consider as 10 kilometers. घर से स्कूल को 10 kilometers, स्कूल से घर को 10 kilometers. Okay, so यहाँ पर distances are going to be same. So we write v average is equal to d plus d divided by d by v1 plus d by v2. d कॉमन कर दो 1 plus 1. यहाँ पर d कॉमन कर दो 1 by v1 plus 1 by v2. तो क्या हो रहा है यहाँ पर dd कैंसिल हो गया. What is the formula getting? Same as the previous formula. Formula भी same है, only situation is different. क्या होगा यहाँ पर 2v1 v2 by v1 plus v2. Shortcut formula is ready now. Formulas are same in case 1 and case 2. Okay, case 1 है, case 2 है, formula तो same है. क्या है formula? 2v1 v2 by v1 plus v2. Distance average speed के 2 cases को हम खत्म कर दिए. We have finished the 2 cases of a distance average speed. We shall discuss about one more case, last case. क्या था यहाँ पर? Average speed. Average speed के अंदर क्या था? Distance average speed था. और नेक्स्ट क्या था? टाइम एवरेज स्पीड था. हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड का केस 1 खत्म कर दिए, हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड का केस 2 भी खत्म कर दिए. ओके, एंड इन बोथ द केसेस वी गॉट द सेम फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड, व्हिच इज 2v1 v2 by v1 plus v2. अभी टाइम एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? शall डिस्कस अबाउट टाइम एवरेज स्पीड. ओके, तो टाइम एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? नाउ जस्ट हियर. ओके, so here time average speed का मतलब क्या है? If a body travels first half of the time with speed v1 and next half of the time, next आधा टाइम कितना स्पीड से जाएगा? v2 स्पीड से. अभी इसको एग्जांपल ले लो, इसको क्या करो? फर्स्ट 1 आवर. ओके, पहला आधा घंटा कितना स्पीड से जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट 1 घंटा, पहला 1 घंटा, दूसरा घंटा कितना स्पीड से जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस टेक द जनरल फार्मूला. जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला क्या है? वी एवरेज इज इक्वल टू d1 plus d2 by t1 plus t2. ओके, सो व्हाट इज नॉट डिस्कस्ड हियर? ओके, यहां पर क्या चीज के बारे में डिस्कशन नहीं? नो डिस्कशन ऑफ डिस्टेंस विच इज टेकन एज d. यहां पर कहीं भी डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन नहीं है, तो यहां पर वी हैव टू रिमूव द डिस्टेंस एंड रिप्लेस. व्हाट इज दैट? यहां पर v1 लिखेंगे d1 by t1 और d1 is nothing but v1 t1. Similarly v2 is nothing but v2 t2. well, speed is nothing but distance by time, distance is nothing but speed into time. तो v एवरेज वैसे रख देंगे, d1 के प्लेस में क्या लिखेंगे? v1 t1 plus v2 t2 और t1 के प्लेस में वैसे रख देंगे t1 and t2. So first half of the time, next half of the time. So v average is nothing but v1 t by 2 प्लस v2 t by 2. क्योंकि 2 घंटे लिए ना यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 आवर्स, उसमें से फर्स्ट 1 आवर, सेकंड 1 आवर, डिवाइडेड बाय t by 2 प्लस t by 2, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम लिया ना. सो t1 इज नथिंग बट t by 2, t2 इज आल्सो गोइंग टू बी t by 2 हियर. सो t by 2. अभी क्या करेंगे यहाँ पर? व्हाट आर गोइंग टू डू?
we shall just take V average is equal to T by 2 common कर दो, V1 plus V2 divided by T by 2 common कर दो, 1 plus 1 T by 2 gets cancelled. V average is nothing but V1 plus V2 by 2. ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर a particle moves with a speed v1 and comes back to the initial position with a speed v2, what is an average speed बोल के पूछा। so this is the formula which we have derived। यहाँ पर बुक के अंदर सॉल्यूशन ऐसा दिया तो हम फॉर्मूले को ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मूला, दिस इज केस 2 इन एवरेज स्पीड, दिस इज केस 2, ओके। और एक प्रॉब्लम हम करना भूल गए, we forgot to do one problem। ओके, दिस प्रॉब्लम वी फॉरगॉट टू डू। क्या 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 भूल गए हम इसमें से, देखो यहाँ पर। सो आई टोल्ड यू दैट a body travels 30 kilometers with a speed of 60 kilometers per hour and next 40 kilometers, next 30 kilometers with a speed of 40. That means this is 60 and this is 40 kilometers per hour. Then what is an average speed in the case 1 of distance average speed? For that the formula is 2 v1 v2 by v1 plus v2, and just you have to write here v average is nothing but 2 v1 v2 by v1 plus v2, and that is 2 v1, v1 कितना है यहाँ पर 60, 60 into 40 divided by 60 plus 40, nearly 48 kilometers per hour you are getting the answer। कितना आंसर आएगा यहाँ पर 48 kilometers per hour is going to be your answer, ठीक है। Okay, so I think you understood all the cases here now। Now just see it। अभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, थोड़ा यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। वी विल यूज इंटीग्रेशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या है देख लो अच्छी तरह से आप यहाँ पर, थोड़ा यू गेट नॉलेज सी। ए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इज s is equal to 3t square plus 2t। फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? अभी हम लोग जा रहे, वी आर गोइंग फ्रॉम हाउस टू कॉलेज, घर से कॉलेज को जा रहे, देयर इज अ स्पीडोमीटर इन ए व्हीकल, टू व्हीलर ले लो या फोर व्हीलर, देयर इज अ स्पीडोमीटर। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग इन स्कूटर, अरे पल्सर बाइक, देयर इज अ डिजिटल स्पीडोमीटर। अभी जा रहे हैं हम लोग, अब देख रहे इसके अंदर, देख रहे किसके अंदर देख रहे हैं हम, पल्सर गाड़ी के स्पीडोमीटर को देख रहे हैं। रेस कर रहे, स्पीड जा रहे बहुत, देखा 100 किलोमीटर पर आवर बता, आवर स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर बता, आवर स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड जा रहा, बॉडी गाड़ी शेक होना शुरू हो गई, 110 किलोमीटर गोइंग कंटीन्यूअस लाइक दैट, ओनली बाइक इज गोइंग टू शेक at that particular time, your speed is 110 kilometers, that is called as instantaneous speed, instantaneous velocity बोल सकते। यहाँ पर क्या होगा, instantaneous speed। instant coffee means we are preparing coffee at that particular instant, there is no time, just दूध ले लो, काफी डालो, मिलाओ, बस खत्म। instant means immediately on that particular time, particular spot your work is being done। So what is the meaning of instantaneous speed? Speed at a particular time t is equal to 3 seconds। तो speed मालूम करना है तो we have to differentiate, okay? बहुत सारे लोग बोल रहे सर हमको मैथमेटिकल फिजिक्स कुछ भी नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, कुछ भी नहीं, क्या करने का है हमको? we are math students, you are the math students, to learn all the maths you are feeling it is हमको बेसिक्स ही नहीं आते मैथ्स में, not necessary यार, no need of any basics of maths, just you remember few formulas which I am going to explain। बस उतना ही करना है, क्या करना है, few formulas you have to remember। क्या है ये, डिफरेंशिएशन d by dx of x power n, ये फॉर्मूला याद रखो, d by dx of x power n, what is your answer, nx power of n minus 1, n into x power of n minus, इतना फॉर्मूला याद रख लिया तो खत्म, ओके। सो अभी यहाँ पर देखो d by dt of t square बोलो, t square क्या करेंगे इसको, 3 into t power of, sorry क्या है, 2 है ना, yeah 2 is there, so numerator power will come before 2 into t power of 2 minus 1, so 2t power of 1 which is nothing but 2t। तो इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या आ रहा हमको, 2t आ रहा, कांस्टेंट if you differentiate what you get, so d by dt of 2 is a constant, it's going to be 0, differentiation of a constant is 0। अच्छा सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, what is the meaning of differentiation? I'll tell you about the differentiation, क्या मतलब है इसका। For example, this is your house, this is your college, from house to college how many kilometers are there, it is 10 kilometers, okay। but during this time you have traveled this much part of the college or road with a speed of 110 kilometers per hour, okay। you have traveled with a speed of that particular extent, इसको क्या बोलते हैं, instantaneous speed बोलते हैं, क्या बोलते हैं, you have traveled this much part, so total distance अगर for example total distance is taken as x, okay, so what is this much part,
इतना सा डिस्टेंस हम क्या बोल रहे हैं इसको, यू कॉल इट एज dx. dx, you have traveled that distance with a speed of how much? 110 kilometer, 110 kilometers to a time of 5 seconds. कितनी देर तक चले हम 110 किलोमीटर से 5 सेकंड्स तक चले, कितना 110 किलोमीटर ट्रैवल फॉर 5 सेकंड्स कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, इसको बोलो dt, समझे. अभी dx क्या होगा, 10 किलोमीटर, सॉरी x is 10 kilometers, and time you have taken to travel from house to school total time is, for example, 1 hour, 1 घंटा. you have gone in a bicycle, 1 घंटा, total distance is 10 hours. और इसको क्या बोला, okay, 1 hour, 1 hour you have traveled. So in that 1 hour I am taking only smallest part of the distance. कितना, how much time, how much distance you have traveled. यहाँ पर कितना distance, dx is equal to 10 meters. okay, कितना distance travel करे, 10 meters तक travel करे, कितना speed से travel करे, 110 kilometers per hour speed से travel करे, और कितना टाइम तक ट्रैवल करे, यू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ, यू ट्रैवल अप टू कितना, 5 सेकंड्स तक 10 meters. ओके, ट्रैवल 5 seconds with a speed, instantaneous speed of 110 kilometers per hour. कितना देर तक, 5 kilometers. So this dx, see कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे हम, 10 meters, and how much time you have taken to travel 10 meters, 5 seconds. okay, 5 seconds बोल के. then what is the velocity here, instantaneous velocity का फॉर्मूला क्या है, dx by dt. छोटा सा डिस्टेंस और कितना टाइम, छोटा सा टाइम. डिफरेंशिएशन मींस डिवाइडिंग, डिफरेंशिएट, डिवाइडिंग. अभी क्लास में हम कभी कभी बोलते रहते हैं, लड़कियों को ज्यादा मार्क्स दे दिया सर, लड़कों को मार्क्स नहीं दिया, ये बोलते रहता है, इससे लॉ ऑफ नेचर. लड़कियां थोड़ा भी अगर प्यार से बात कर दिया, सर प्लीज सर, प्लीज सर, अरे हाउ मच मार्क्स यू वांट, 5 मार्क्स, टेक इट, ले लो, ज्यादा मार्क्स ले लो. अभी लड़का जाके पूछा, सर प्लीज गिव मी एटलीस्ट 1 मार्क, अरे बेवकूफ, कुछ भी लिखा है तो क्या मार्क्स देना. ओके, देन दैट बॉय विल से, सर यू आर डिफरेंशिएटिंग गर्ल्स एंड बॉयज. डिफरेंशिएटिंग मींस डिवाइडिंग, डिवाइडिंग. ये इतना सा रोड में से इतना सा पार्ट को हम ले लिए, इसको क्या बोलते हैं, dx. और इस इतना सा पार्ट ट्रैवल करने के जो टाइम हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं dt. दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. ओके, यू आर नेक्स्ट एक्सिस, यहां पर भी सेम दे दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट आर गोइंग एट, लेट अस सी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग ऑन x एक्सिस. सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, x is equal to 2 plus 3t square, ये दे दिया. he is asking us to find out what is the instantaneous velocity at time t is equal to 2 seconds. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, v is nothing but dx by dt, डिफरेंशिएशन करेंगे इसको. 2 का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं, 0, and this is 3 into t square. t square is nothing but 3 into 2t. okay, so how much is equal to 60 are getting, so 60 are getting, कितना टाइम के पास, instantaneous velocity 2 seconds. so instantaneous velocity 6 into 2 is nothing but 12 meters per second is going to be the instantaneous velocity. okay, and what is the average velocity from 2 seconds to 4 seconds. तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x1 ले लेंगे. okay, कितना है टाइम, 2 seconds, x1 कितना, you have to substitute 2 plus 3 into 2 square. okay, so 2 plus 2 to the 4, 4 to the 12, is it okay. so x is equal to 2 into 3t square. so पहले 2 लेंगे, 2 to the 4, 4 to the 12, 12 plus 2 14, 14 meters is x1. similarly we'll find out x2. x2 के अंदर क्या सबसे करेंगे, 4 seconds. so 2 plus 3 into 4 square, क्या हो रहा है यहाँ पर, 4 4 16, 16 3 का 48, 48 plus 6 50, क्या हो रहा है, 50 meters. understood, 50 meters are getting. okay, then what is going to be the average speed, x2 minus x1 by t2 minus t1. it is starting from 2 to 4. so x2 is how much, 50, 50 minus 14 divided by कितना यहाँ पर, 4 minus 2, 4 minus 2. so it's going to be how much, 36 I think, 36 divided by 2. your answer is ready, 18. 18 meters per second is going to be your answer. okay, now just here, यहाँ पर देखो यहाँ प्रॉब्लम. okay, so what is this problem going to be, a car is moving along a straight line highway with a speed of, a car यहाँ से जा रहा, कितना स्पीड, v was 126 kilometers. okay, and 126 kilometers per hour is brought to rest, means initially this was the speed, it is brought to rest means final velocity is 0. okay, within a distance, कितना distance, s is equal to 200 meters. s is equal to 200 meters. what is the retardation of a car assumed uniform, how long. okay, what is the retardation, retardation का मतलब क्या है, acceleration मालूम करना. negative acceleration, what is that, v square minus u square is equal to 2 into s. क्यों, क्योंकि यहाँ पर v square minus u square is equal to 2s है, acceleration is nothing but v square minus u square by 2 into s. so what is v square, 0 square minus 126. see 126 you have to convert into meters per second, क्या है यहाँ पर, 126 kilometers divided by hours. so 126 कितने किलोमीटर सेट है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, 1000 meters. 1 आवर के अंदर 60 सेकंड, 60 मिनट्स, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स. तो ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, 2 5s are 2 3s are, so 126 into 5 by 6 3 are 18. तो 126 into 5 by 18 अगर करें आप लोग कितना था, 35 meters per second. so you are using this formula, कौन सा formula, v square minus u square is equal to 2s initial velocity final velocity. but I have directly taken this formula, a is equal to 0 square minus u square. u square का मतलब क्या है, 35 whole square
डिवाइडेड बाय 2 into s 200 मीटर्स। इसको कैलकुलेट करना है बस। और क्या करना है यहाँ पर हाउ लॉन्ग का मतलब क्या टाइम, टाइम इज आस्किंग हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप बोल के पूछा। तो एक्सेलरेशन अपने को कितना आएगा यहाँ पर माइनस 3.06 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस 3.06 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर गेटिंग एक्सेलरेशन। उसके बाद टाइम पूछा हाउ व्हाट टाइम इट विल टेक टू कम टू स्टॉप। अगर टाइम पूछ रहा तो यू हैव टू टेक v इज इक्वल टू u प्लस a, or you can take general formula for acceleration a is equal to v minus u by t and t is equal to v minus u by a। okay? तो v क्या था 0 था, माइनस u क्या था 1 I mean 35 divided by how much again 3.06 again। so time here is getting 11.437 seconds। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, you can just calculate it। okay? तो टाइम कितना आएगा ओके तो 3.06 मतलब ओके 3 ओके 7.437 लिखेंगे। सो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। ओके लाइक दिस यू डू द प्रॉब्लम हियर। नेक्स्ट okay you can just see this problem। a motorist while driving at a speed of 72 kilometers per hour sees the boy standing at the road। ओके अभी देखो ये जो है ना टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व करो, बुक का सॉल्यूशन है, हम इसको थोड़ा बाईपास कर देंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके a motorist while driving a speed मतलब सबसे पहले क्या है the easiest method to solve the problems is you have to definitely draw an imaginary diagram। उस प्रॉब्लम को डीकोड करने के लिए सबसे पहले उसका इमेजिनरी डायग्राम अगर डाल दिया ना तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना इतना आसान जस्ट इतना डालना है। मोटरसाइकिल हटाना है, मोटरसाइकिल डालेंगे तो फिर एम्बुलेंस में फिर को आते कौन सॉल्व। ठीक मोटरसाइकिल डालना है, सिर्फ बॉल डालना है बस। ठीक ड्राइविंग विद स्पीड ऑफ कितना इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक डिस्टेंस कितना है 52 मीटर्स। और क्या होगा स्टॉप द कार, he applies the brake and stops his car 2 meters from the boy। a motorist while driving with the speed of sees the boy standing on the road at a distance of okay यहाँ पर एक यहाँ पर एक जो कि रोड के ऊपर खड़ा हुआ है at a distance of कितना डिस्टेंस है ये 52 meters डिस्टेंस है। okay he applies the brakes and stops the car in distance of 2 meters from the boy। a distance of 2 meters के पास कार रुक जाएगी, मतलब बॉय के और कार के बीच में अभी 2 डिस्टेंस बाकी है, मतलब व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस। remaining distance is only 50 meters from here to here। this is the total distance between the boy। क्योंकि बॉय लड़के को टकरा के उड़ने से क्या फायदा है, लड़के को मार दिया, उसको मार के नीचे गिराने के बाद ब्रेक हो गया, फायदा क्या है। उसको मारने से उसको टक्कर मारने से एक 2 मीटर पहले रुक गया ना तो उसको थोड़ा भी लग गया कुछ भी हो सकता है। तो ये हैज टू स्टॉप बिफोर ही मूविंग। इसका मतलब इफ इट इज 450 तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर्स। दैट्स इट। ये छोटा सा सॉल्यूशन है यहाँ पर। 72 को क्या करना है, यू हैव टू टेक इनिशियल वेलोसिटी 72 into 5/18 18 4 5 20 मीटर्स पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 5/18। ठीक है दैट्स। तो अभी करना क्या है हमको, व्हाट इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट फाइंड द एक्सेलरेशन कास्ट। he applies the brake and stops his car at a distance of 2 meters from the boy। find the acceleration caused due to application of brakes। एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 into s। ये मेरा फार्मूला आसान फार्मूला। ये जो अप्लाई करते हैं ना ये थोड़ा खिचड़ी दिखता है। आई यूज दिस फार्मूला जस्ट वेरी सिंपल। 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u क्या है 20, तो 20 स्क्वायर बाय 2 into s इज नथिंग बट 50। क्योंकि he has to stop before 2 meters of the boy, तो ये क्या हो गया -20 into 20 divided by 2 5 10 100। तो ये दो चले गए, क्या हुआ 4। एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकंड इज गोइंग टू एक्सेलरेशन। ठीक है ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके आ गया ना एक्सेलरेशन आ गया। और क्या पूछ रहा टाइम, टाइम के लिए मेरा शॉर्टकट फार्मूला क्या है, u by a बेसिक, बस इतना ही और ज्यादा ना, u by a। अभी क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेगा ये u प्लस a t डालेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 बोलेगा, और क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फिर ये माइनस होगा, इसको a into t डालेगा, माइनस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू u बोलेगा, t इज इक्वल टू u by a बोलेगा, तो हम डायरेक्ट डाल देंगे u by a। टाइम इज नथिंग बट u by a, u का मतलब कितना 20, एक्सेलरेशन कितना है अभी 4, तो आंसर इज 4 5 20 5 सेकंड्स इज गोइंग टू आंसर बस। ओके अभी देखो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट सॉल्यूशन करेंगे इसको। हम हमेशा शॉर्टकट ही यूज करते रहते हैं तो इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर देंगे। अभी देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको जनरली हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। आप चाहे तो देख लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, गो एंड सी कोई भी बुक के अंदर देख लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड में, जनरली इसको इंटीग्रेशन यूज करके सॉल्व करते हैं, हम इसको बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करेंगे। अभी देख लो क्या दिया यहाँ पर, व्हाट ही हैज गिवन द प्रॉब्लम। सिंपल थिंग इज v is equal to square root of alpha into ds बोल के दे दी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स v square is equal to alpha plus ds, v square minus alpha is equal to b into s। ओके अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अल्फा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अल्फा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के साथ। ओके अभी देख लो यहाँ पर हमको क्या बचने वाला है, b जो है 2a के प्लेस में, सो यू राइट 2a इज इक्वल टू बीटा, तो a इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज गोइंग टू आंसर। ठीक है बीटा बाय 2 इज गोइंग, इतना आसान मेथड है, अगर आप जाके कोई भी बुक में देख लो, इतना इंटीग्रेशन इतना डिफरेंशिएशन यूज करेगा कि सर में डैंड्रफ आ जाएगा। ओके
तो यहाँ पर देखो पार्टिकल स्टार्ट्स its motion from rest under the action of constant force. If the distance covered in the first 10 seconds is s1 and that of next 20 seconds more. Okay, next 20 seconds is s2. Then what is the relation between s1 and s2? So क्या problem है यहाँ पर? So what is this problem actually? s1 is to s2 is to s3. Okay. इसको क्या बोलते हैं? Galileo ratio बोलते हैं. Galileo ratio मतलब it will travel 1:3:5:7. ये शॉर्टकट मेथड आपको समझा दूंगा. शॉर्टकट मेथड क्या है? पार्टिकल ट्रैवल्स. अभी देखो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊँ. कोई भी बॉडी यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी से शुरू कराना और t इज इक्वल टू 2 सेकंड. फर्स्ट 2 सेकंड कितना जाएगा? सेकंड 2 सेकंड कितना जाएगा? थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस जाएगा s1 और थर्ड 2 सेकंड क्या होगा? और थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस जाएगा s3. तो ये क्या है फॉर्मूला? s1 is to s2 is to s3 क्या है? इट इज 1:3:5. क्यों? बिकॉज s is equal to u plus a into n minus half. इनिशियल वेलोसिटी 0. ये अगर फर्स्ट 1 सेकंड लीजिए तो a into 1 minus half. तो क्या होगा? ये हाफ into a होगा. ये s1. Second, s is equal to n equal to 2 seconds डाल दो यहाँ पर n से 2 seconds. Okay. What 2 seconds means what will write? a into 2 minus half. So s2 is equal to a. 4 minus 1 that is 3/2. So how much are getting? 3/2 a you are getting. अब similarly s3 क्या आएगा? Similarly s3 आएगा 5/2 a. s3 will become 5/2 a. अगर ये ratios अगर ले लिए a और 3/2 a, 5/2 a, s1 is to s2 is to s3 is nothing but a/2 is to 3/2 a, 5/2 a और 1/2 a डाले तो 1:3:5 रेशियो. ठीक है. तो यही तो आने वाला है रेशियो. तो इसका हम शॉर्टकट में क्या सॉल्व करेंगे? फर्स्ट 10 सेकंड बोल के बोलो. हाँ, यहां पर क्या दिया? फर्स्ट 10 सेकंड्स. ओके, फर्स्ट 10 सेकंड्स. उसके बाद नेक्स्ट 20 सेकंड बोल के बोलो. इफ इट वाज फर्स्ट 10 सेकंड्स एंड नेक्स्ट 10 सेकंड्स इट वाज 1:3. दैट इज s1 is to s2 will be 1:3. बट फर्स्ट 10 सेकंड्स नेक्स्ट 20 सेकंड बोल के बोलो तो क्या करेंगे? 1:3 + 1 which is nothing but 1:4 हो जाएगा. क्यों? नेक्स्ट 20 सेकंड्स बोला तो 1 will be adding up. ये मैं शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूं. 1 will be adding up here. So you will write s1 by s2 is nothing but क्या हो रहा है? 1/4. Therefore s2 is nothing but 4 times of s1. अब आपको डाउट आ रहा होगा क्या सर क्यों ये सर ऐसा? ओके, ये तो शॉर्टकट में था. फर्स्ट 10 सेकंड्स में होता रहेगा. सेकंड क्योंकि as you go longer as the speed increases it travels more distance in the same time. तो ये प्रॉब्लम में मैं अभी YouTube में अपलोड कर रहा हूं. तो ये क्या है प्रॉब्लम? इक्वेशन वाज लाइक दिस. v is equal to square root of 5000 plus 24x. This was JEE क्वेश्चंस. ओके, सो JEE के अंदर फिल अप द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये. सो इंटीजर टाइप क्वेश्चन का क्या है यहाँ पर? v is equal to square root of 5000 plus 24x दिया. इसको इंटीग्रेशन यूज करके करते हैं जनरली. हम क्या करें? इंटीग्रेशन को अवॉइड करने की कोशिश करें. तो हम क्या करेंगे? इसको यू हैव गॉट दिस वन v square is equal to हम क्या करेंगे? दिस विल टेक द square root of 5000 whole square is equal to 24x. We will compare this with our equation v square minus u square. This is 24x. v square minus u square is equal to 2ax. So in the place of 2a, what is this? देखो 24. 2a is nothing but 24. a is nothing but 24/2, which is nothing but 12 meters per second. So your answer is 12 meters per second here. Okay. इस तरह हम solve करेंगे. Let us stop the class today. Hope you have enjoyed the class. Let us see the next class.